वक्रतुण्डमहाकाय कार्तिकेयाय पार्वती प्रियनन्दनाय च महादेवकुमाराय सुब्रह्मण्याय ते नमः। Namaste everyone. So we will now sit in meditation. Everyone, sit down, sit comfortably. Close your eyes. And let's join with Mataji, Mavtar Babaji. And once again, today we'll join with Parvati Ma with some wisdom coming from the book, the next book, Thousand Flowers. सर आप म्यूट में हो। थाउजेंड्स हाँ ओह, मैंने अनम्यूट किया था, हो गया था, फिर म्यूट हो गया। हाँ, इस okay, good morning, good evening, masters. So, yeah, now it is on unmute. Okay. So, let's sit down comfortably wherever you are. Close your eyes and let's join with Mataji, Mavtar Babaji, Parvati Ma, and let's sit in our meditation session. तो सब लोग बैठ जाएं आराम से, सीधी कमर करके कंफर्टेबली आंखें बंद कर लें और जुड़ रहे हैं माता जी, महाअवतार बाबा जी और पार्वती माँ के साथ ध्यान में बैठेंगे। सांसों के साथ जुड़ेंगे और कुछ ज्ञान जो पार्वती माँ की जो नेक्स्ट किताब आ रही है, 1000 फ्लावर्स ऑफ लव, उसके एक चैप्टर से कुछ ज्ञान शेयर करेंगे। So keep your back straight. Today we will get into our breathing, surrender to the breaths, get into a state of peace, state of no mind, and then we'll share some wisdom from Parvati Ma from the book 1000 Flowers of Love. That's the next book after 1000 Seeds of Joy. So
Take a few deep breaths and breathe out with a sigh, like breathe out from the mouth, and do this 7 times. Take a deep breath in all the way into the root chakra, and then breathe out 7 times. ऐसे 7 बार कर रहे हैं हम. सांस रूट चक्रा तक ले रहे हैं और फिर मुंह से सांस निकाल रहे हैं 7 बार. This brings you to a reset. When you do something like this, the energies get a chance to get out, the mind can quieten, and now start doing normal breathing. तो इससे थोड़ी सी बॉडी रीसेट हो जाती है, दिमाग शांत हो जाता है, थोड़ी से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है दिमाग में दिन भर की थोड़ी सी रिलीज हो गई. और अब नॉर्मल सांस में आ जाइए और सांसों को एक रेगुलर पैटर्न में लेने के लिए गोले बनाने लग जाइए. नॉर्मल सांस में आना भी कभी कभी मुश्किल होता है क्योंकि हम लेना चाह रहे हैं मगर कुछ विचार आ जाते हैं. गोले में रहने से कहीं ब्रेक नहीं है, सांस में ही रहना है. जब ब्रेक नहीं है, पूरी अवेयरनेस सांस के साथ है, तो अपने आप फोकस विचारों से चला जाता है और आप सांसों में आ जाते हैं. तो गोलों में सांस लेते रहिए. रूट से क्राउन, बैक टू द रूट. पहले बड़े गोले फिर छोटे गोले कर लेंगे. बस गोलों पे ध्यान दीजिए. So start breathing in circles. Breathing in circles allows you to totally focus on the breath because there is no break. So continuously you are focusing on the breath. Breath is coming in from the root to the back to the crown and to the front into the root. As you do this, paying full attention on the circles, there is complete focus on the breath. No room to escape into the mind. Keep doing this. Let your body tell you the intensity of the circle, the energy. If the thinking mind is active, then you need to put more energy. You mean physically you need to breathe a little bit more intensely and relax a little more. If you're a little bit too much in the mind, if you are getting relaxed, then you can reduce this intensity. अगर विचारों में ज़्यादा हैं तो थोड़ी सी इंटेंसिटी और ज़्यादा करते जाइए. ब्रीदिंग इन थोड़ा जोर से, ब्रीदिंग आउट एकदम रिलैक्स होके.
और कम विचारों में है तो इंटेंसिटी कम रहेगी। अपनी बॉडी को डिसाइड करने दीजिए। बॉडी को पूछिए कितनी इंटेंसिटी में ब्रीदिंग करनी है। हमेशा शरीर पर पूरा विश्वास रखें। शरीर वर्तमान में है। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। मन झूठ बोल सकता है, शरीर हमेशा सच में। Stay in the body. The body never lies. Always in the present moment. Always in truth. The mind can lie. The body you can completely trust. Let the body tell you how you are breathing in circles. And even if thoughts are coming, do not judge them. Today we'll go deep into this wisdom, how thoughts on their own are neutral, but it is we have to know how to use thoughts. If you can just watch the thoughts as a witness, any thought does not create a problem. You don't hold on to it. This happens when you are breathing. When you are not breathing, thoughts will get tied with some emotion. Every thought will attract some emotion. Could be any emotion: loneliness, anger, fear, hate. Something will be there when you're not breathing so much. The choice in life is, do you want your thoughts to keep merging with
breathing, so then they are neutralized, or you want your thoughts to keep arousing emotions. When you do that, you can go into the mental world. You can enter into many toxic places, emotions driving thoughts, thoughts driving emotions. It can become even a living hell. Hell realms in Buddhism, places of hell, are imagined mental realms where thoughts, emotions get tied in very strange ways. So there's a danger. If you're not breathing, thinking emotions, there's a little danger of this happening. विचार अपने आप में प्रॉब्लम नहीं करते अगर आप सांसों में जुड़े रहें, एक साक्षी भाव से विचारों को देखते रहें और सांसों को लेते रहें गोले में। विचार आएंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विचार कहीं अटक नहीं जाएंगे, सांसें चलती रहेंगी। आते भी हैं तो आने दो, आप अपना ध्यान सांसों में रखो, गोलों में, इन एंड आउट। विचार कब अपनी मानसिक भावनाओं से जुड़ जाते हैं, जैसे गुस्सा, लालच, डर, द्वेष, घृणा, जो सारी भावनाएं हैं, मानसिक भावनाएं, ऐसा कब होता है जब विचार इनसे जुड़ जाते हैं। गहराई में जाएंगे तो देखेंगे ये तभी होता है जब हम सांस को भूल जाते हैं। कोई इंसिडेंट आया, किसी पे गुस्सा आया, अब विचार जुड़ गया है इमोशन से, अब इनका खेल चालू। जितना ज़्यादा इमोशन उतने ज़्यादा उसी तरह के विचार, जितने ज़्यादा उसी तरह के विचार उतना गुस्सा। सिनर्जी बन गई, एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं। सांस पर अगर ध्यान नहीं देंगे और ये भावनाओं में खो जाएंगे तो ये थोड़ा खतरा हो सकता है इसमें, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। विचार से भावनाएं, भावनाओं से विचार, कोई भी भावना हो, जैसे कि आपको ग्लानि होती है, गिल्ट फीलिंग होती है, एक विचार आया गिल्ट का, भावना से जुड़ गए और उस भावना में रहे और उसी तरह के विचार आए, उसी तरह के विचार और आए,
ग्लानि और बढ़ गई, उसके विचार और बढ़ने लगे। ये एक साइकिल है, विशियस साइकिल। इसमें डूबते जा सकते हैं क्योंकि सांस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। सांस आपकी रक्षा करती है, केवल आपको ऑक्सीजन ही नहीं देती, आपके दिमाग, ब्रेन की रक्षा करती है, आपके माइंड की रक्षा करती है। क्योंकि वो ही, अगर आप, ये जो साइकिल बन गई है, विचार और भावना, फिर विचार और फिर भावना, एक दूसरे को बढ़ावा देना, सांस लेने लगेंगे गोलों में, उसको आप कट कर देंगे, विचारों को भावनाओं से कट कर देंगे, कॉर्ड कट हो जाएगा। धीरे धीरे विचार भी कम हो जाएंगे, सांसों में ही आ जाओगे। ऐसा नहीं करने से, सांस पर नहीं ध्यान देने से एक बड़ा खतरा भी हो सकता है। इतने गहराई में आप जा सकते हैं विचारों और भावनाओं को लेकर कि जो नरक हैं, नरक का डिमेंशन है, जिनको बुद्ध धर्म में इमेजिन्ड हेल्स बोलते हैं, वो यही दुनियाएं हैं जो कि आप 1 या 2 डायमेंशनल दुनियाएं बोल सकते हैं। हेल्स हैं, नरक हैं। इसमें इमोशंस, विचार, बॉडी नहीं है, ब्रेथ नहीं है, इनका जोड़ चलता रहता है। आपको ग्लानि हो रही है, और ग्लानि हो जाएगी, और वैसे विचार, और ग्लानि, और वैसे विचार, और ग्लानि। घृणा हो रही है, घृणा के विचार, और सोचेंगे और घृणा आएगी, और घृणा आएगी, और वैसे विचार सोचेंगे, और वैसे विचार सोचेंगे, और घृणा आएगी। ये लूप गहराई में जाता जाता है, जाता जाता है। पेन बढ़ता जाता है। इसी को आप नरक कहेंगे। एकदम माइंड में आ गए, सांस कहीं नजर नहीं आ रही। हल्की हल्की चल रही होगी सांस, क्योंकि बॉडी को चाहिए, मगर उसकी कुछ अवेयरनेस नहीं है। सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। ये जो विचार और भावनाओं का टॉक्सिक मिक्सचर है, इसको खत्म किया जा सकता है। सांसों के गोलों में आ जाइए, पूरा ध्यान सांसों में ले आइए। धीरे धीरे भावनाएं शांत, धीरे धीरे विचार शांत, और आप सांसों में आ गए हैं। तो ये खाली मेडिटेशन के लिए नहीं कर रहे, इस सांस के गोले आप कभी भी कर सकते हैं। दिमाग के जो नरक हैं उनसे निकलने के लिए ये रक्षा करेंगी, सांसें आपकी रक्षा करेंगी। केवल लाइफ सपोर्ट नहीं है, सांसें आपका माइंड सपोर्ट भी हैं, आपके दिमाग को सपोर्ट करती हैं। So your circular breathing can cut the mind
First the emotions, then the thoughts. So it is like a protection. Breath is not just life support, it is also mind support. Stay in breathing, you will calm down, emotions will calm down. You'll break the connection between thoughts and emotions. Thoughts will calm down. So keep breathing in these circles. सांसों को गोलों में लेते रहें. सांसों की अवेयरनेस नहीं होने का जो खतरा है उसको गहराई से समझें कि ऐसा नहीं करने से तो डेंजर है, दिमाग की दुनिया में खो जाएंगे. Feel this danger of not paying attention to breath. When you don't do that, you are in the mind, connecting with emotions, and that can be a dangerous place if you're not aware of the breath. But it's very easy. Just have a strong intention, strong awareness of this danger. Whenever you are aware of the danger, if you see it as danger, you will not step into it. You'll stay with your breathing. The problem in the world is most people don't see the danger of their minds. Mind is a place full of danger. The danger is you'll get lost in emotions and thinking. More emotions, more thinking, and the breath is gone. You're not even aware. You just intensely start feeling emotions more and more thinking, more emotions, more thinking, and you're lost. So right now in this meditation, see how dangerous that place is to not be breathing. If the breath completely is shut out, you are in vacuum, then of course the body will die. Similarly, if you're not at all aware of the breath, zero awareness, and you're in the mind and emotions, that's also dangerous. You don't die, but your mind can go more and more into negative states, depression, insanity, a lot of toxic emotions. So, what protects you? Breath. So, masters, please realize how breath saves you, not just your life, but also your mind. Saves both.
तो इस खतरे को गहराई से समझना है कि सांसों की अवेयरनेस न होगी तो आप मन की दुनिया में, दिमाग की दुनिया में डूबते जाते हैं। वही विचार, वही भावना, फिर वही विचार, फिर वही भावना, सुबह से शाम दिमाग में खोए हैं, क्योंकि सांस की अवेयरनेस नहीं है। तो ये खतरनाक जगह है। बार बार हम खतरा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक बार आप समझ जाएंगे कि खतरा है तो अवेयर रहेंगे, अरे सांस पे आना है वापस। खाली मेडिटेशन में ही नहीं, खाली अभी नहीं, दिन में भी कभी कभी आप अपने आप को पकड़ लेंगे, अरे मैं तो बहुत ज़्यादा सोचने लग गया, कहाँ पहुँच गया मैं, चलो वापस सांसों में। इस तरह से जीवन में सांसों को लाएंगे तो मन दिमाग का प्रभाव कम हो जाएगा, इमोशंस कम हो जाएंगे, सांसों में रहना सीख लेंगे। कई बार विजडम या ज्ञान केवल यही होता है कि क्या चीज हमारे लिए खतरनाक है और क्या अच्छी है। हम अपने मन को, इमोशंस को ऐसे नहीं देखते कि ये खतरनाक हैं, मगर हैं, क्योंकि इनमें खो जाएंगे तो डिप्रेशन आ सकता है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए कि दूसरों को खतरा हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो ये मन की दुनिया खतरनाक हो सकती है, मगर सांसों से आपकी रक्षा हो रही है। सांसों में आते जाएं दिन भर, कभी भी जब भी मन में ज़्यादा आ गई सांसों में आ जाएं, वापस इमोशन कम हो गया, रोना भी आ रहा है तो सांसों में आ जाएं, खूब रो लीजिए मगर सांसों के साथ रोइए, वो अनुभव ही कुछ और होगा, इतना डीप रिलीज होगा कि रोने का भी फायदा पूरा मिल जाएगा। खूब रोना है मगर सांसों के साथ रोना है, और बॉडी नेचुरली कर भी देती है। जब अपन रोते हैं तो सांस भी एक गहरी हो जाती है। जैसे आप रोने की एक्टिंग भी करेंगे तो सांस अंदर आ रही है, देखा आपने, बॉडी अपने आप करती है। तो सांसों को पे ध्यान रखकर आने दीजिए इमोशंस, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये सांसों को लेते रहिए गोले में, कीप breathing in circles. We were just sharing that even when you are crying, it's very good to cry to release the emotion. But even then, be aware of the breath. Keep infusing your body with breath, and your crying will be even more deeper and productive. It will really release what you're trying to release. Keep taking deep breaths and crying,
and it will release. It is when we are crying without breathing that we don't release so powerfully. So again, breath is the protector. So fall in love with breathing. Breathing is the way to cut the cords with emotions, to release the emotions. Keep breathing in circles. Once again, we'll get into some vibrations, divine vibrations. Keep breathing, be a witness, feel the music while being aware of the breath. Let the music flow while you are breathing in circles. सांसों पर ध्यान रखे रहिए जैसे ये म्यूजिक के वाइब्रेशंस, चांट के वाइब्रेशंस आ रहे हैं. गोलों में सांस लेते रहिए और साक्षी भाव से वाइब्रेशंस को महसूस करते रहिए. And feel that energy of protection when you are breathing in circles. As we said, that is a protector of the mind. It protects you from all the mental instabilities, keeps you in the present moment. तो ये चांट दुर्गा माँ की थी. वाइब्रेशंस महसूस करते रहिए. दुर्गा माँ हमारी रक्षा करती है. वो ही रक्षा की एनर्जी इन गोल गोल सांसों में है जो आपकी रक्षा करते हैं. ये सांसें आपकी रक्षा करती हैं, आपको मन दिमाग के अंधेरे से बचाती हैं, वर्तमान में ले आती हैं. So today we will touch on one more topic related to this, which is
There are two kinds of minds. This is in the next book. Basically, you can either have a unifying mind or a divisive mind. A unifying mind connects the mind with your body through the breath to the soul, soul to the higher self. It is unifying everything. And the central piece here is breathing. If you keep doing that, breathing is like at the center. It meets the mind, meets the body. Breath makes you aware of the soul with the body, and then soul to the higher self. And that's the nature of a unifying mind. It remains connected to the body. It remains connected to the breath. It remains connected to the soul. The way it connects with the soul is through soul feelings. So keep activating joy, love, gratitude, compassion, freedom, peace, many such feelings of the soul which are unconditional and infinite. They make you aware of the soul. So a unifying mind is connected to the breath, body, soul through soul feelings, and higher self through meditation on divine beings, through mantras. That's the nature of unifying mind. तो हम आज बात कर रहे हैं एक चैप्टर की जो नेक्स्ट किताब में है. उसमें मन को दो तरह के मन बताए हैं पार्वती माँ ने. एक तो है जोड़ने वाला मन और एक है तोड़ने वाला मन. यूनिफाइंग है जोड़ने वाला और डिवाइसिव माइंड है तोड़ने वाला. जोड़ने वाला मन आपको, आपके मन को आपके शरीर से जोड़ता है, सांसों के द्वारा सांसों से जुड़ा हुआ होता है, आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है. आत्मा में आत्मा की भावनाएं जो मानसिक भावनाएं से बहुत बहुत बड़ी होती हैं, अनंत होती हैं. जैसे अनंत आनंद, अनंत प्रेम, अनंत करुणा. इस तरह से शांति, आज़ादी, ये जो सारी भावनाएं हैं जिनको हम आत्म भावनाएं बोलते हैं, इनमें ईगो बिल्कुल नहीं होता. इनमें अनंतता का विस्तार होता है और इनमें जाने से अहम ईगो पिघल जाता है. तो ये सोल फीलिंग्स हैं, आत्मा की भावनाएं जो आपको अपनी आत्मा का अनुभव कराती हैं. तो जो जोड़ने वाला मन है वो मन, शरीर, सांस, आत्मा, सांस से आत्मा को जोड़ेगा, आत्मा से परमात्मा को,
आत्मा से पूर्णात्मा, पूर्णात्मा से परमात्मा, सब कुछ जोड़ते जा रहा है। यह है जोड़ने वाला मन। और दूसरा है डिवाइसिव माइंड, यानी कि तोड़ने वाला मन, जो आपको तोड़ देता है सांसों से, शरीर से, आत्मा से, पूर्णात्मा से, परमात्मा से, सबसे तोड़ देता है। केवल मन ही अकेला रह जाता है। मन में विचार और मन की मानसिक भावनाएं, उनका टॉक्सिक मिक्सचर चलता रहता है। सांसों से टूटा हुआ है, शरीर से टूटा हुआ है, आत्मा से टूटा हुआ है। एक अलग ही दुनिया है उसकी, 1 या 2 डायमेंशंस में। ये है तोड़ने वाला मन। तो 2 तरह के मन है, जोड़ने वाला मन, तोड़ने वाला मन। जोड़ने वाले मन में जाएंगे तो आध्यात्मिक प्रगति होती जाएगी, मगर कई बार हम तोड़ने वाले मन में होते हैं। सांसों का ध्यान नहीं होता, शरीर का भी ध्यान नहीं होता। जब कोई बहुत गुस्से में है, उसे पता ही नहीं शरीर कहाँ है, हाथ कहाँ है, खूब बड़बड़ा रहे हैं। आत्मा का भी ध्यान नहीं, आत्म भावनाओं का ध्यान नहीं, परमात्मा का ध्यान नहीं, किसी चीज का ध्यान नहीं। खाली गुस्से वाले विचार और गुस्सा और एक दूसरे से टॉक्सिक मिक्स होके बस वो तोड़ने वाले मन में जी सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने जो विचार होते हैं, ये सारे ही विचार शांत हो जाते हैं अपना जब एनलाइटनमेंट होता है, सब विचारों के ऊपर चले जाते हैं। मगर रास्ता ऐसा नहीं है कि आज सारे विचार थे, कल एनलाइटन हो गए और अब कोई विचार नहीं बचा और एकदम गहरी शांति में आ गए। इतना इजी होता तो बहुत अच्छा होता। रास्ता मन का, विचारों का शांत होने का जाता है जोड़ने वाले मन से, तोड़ने वाले मन से नहीं। तो जुड़ना है, मन को जुड़ना है सांसों से, शरीर से, आत्मा से। जोड़ने वाले मन के जो विचार हैं और तोड़ने वाले मन के विचार हैं, उनमें फर्क समझिए। मैं ये इंग्लिश में बताता हूँ और फिर वापस आता हूँ। So these 2 kinds of minds, unifying mind and divisive mind. Divisive mind breaks you from your body, breath, soul, higher self, gods, divine beings, everybody. This is a divisive mind that lives in its own world, toxic thinking and emotions. No breathing, no body, no soul. And the unifying mind is joining you with your breath, with the body, bodyfulness, mindfulness, joining you with your soul through soul feelings, feeling compassion, love, joy, gratitude, all of this. Feeling your higher self and God's divine beings. It's unifying everything. Now, what we will discuss is the type of thoughts
Simple thoughts of unifying mind and divisive mind. And you'll be amazed by the simplicity. All thoughts are illusions at the end of the day, because enlightenment is beyond thinking. So there is no thought which captures reality. Enlightenment is beyond all thoughts. However, the unifying mind produces unifying thoughts. That's the main wisdom. And divisive mind produces divisive thoughts. So what are unifying thoughts? What are divisive thoughts? Take a simple sentence. All humans are equal. Take another sentence. Some humans are better than other humans. Can you know for 100% which statement is more true? You cannot. Can you really say all humans are equal? How can they be equal? Some are 6 feet, some are 4 feet, some are 5 feet, some are fat, some are men, some are women. There are many differences. You cannot say all humans are equal. The second statement was, some humans are better than other humans. Do we know this to be true? Well, they might be better in something. Maybe one human is better than the other in how they play cricket. But maybe they are worse in how fast they can read a book, or how much they can meditate. So even that is not true. How can you say some humans are better than others? Better as not a definition with one thing. The point is, both statements are incorrect. You cannot say all humans are equal. You cannot say some humans are better than others. Both are false. All thoughts are false. Reality is beyond thoughts. However, try to guess which one. And as you're doing this, keep breathing. We're learning how to join our circular breath with the unifying mind, with everything, even with our thinking, with our body. So keep breathing. And as you're breathing, ask yourself the two statements, some humans are better than others and all humans are equal. Which one represents a unifying mind? Which one represents a divisive mind? Keep breathing as you keep this question in your mind. Which makes you feel as if you are joining with your body and soul? Which statement? Some humans are better than others? Does that make you feel more love? Make your breathing nicer? Does that make you feel you are in your body? Does that make you feel God? Which is producing a unifying mind? Some humans are better than others, or all humans are equal? If you go deep, you will find all humans are equal will create a unifying
mind, because you're honoring all humans. You are declaring that all of us are equal in some sense, equally deserving of love, equally deserving of a good life. So all humans are equal is a unifying thought. We're not saying truth or false. We already agreed both statements are false, because a 6 feet human is not the same as a 5 feet human, so they're not equal. We're not discussing the truth and false. Both statements are false. But at the same time, one of them is unifying. That is, all humans are equal. If you keep surrendering to unifying thoughts, all humans are equal, all humans have suffering, all humans deserve an end to their suffering. We should all love each other. God loves everyone. All religions nourish human soul. Even though that some of you may think that's not true, but just surrender to that statement and you'll feel more love. So this is the way you develop a unifying mind. You emphasize unifying thoughts. Divisive thoughts will be, some humans are better than others. I always win in some game like chess. I am better than you. India is better than Pakistan. Hinduism is superior to Christianity. Buddhism is the best religion. All of these are divisive statements. There might be some truth to some of these statements, but they are divisive. They'll produce division. So the idea in a skillful spiritual life is to surrender to unifying thoughts. We're not discussing truth because all of mind is false. Mind lives in past and future, it is false. The truth increases when you surrender to the breath, go into the body that's more in the present moment, go into the soul, the higher self, that's where you find truth. The mind has to become more silent, but on that road to silence, a unifying mind will open up the way. Divisive mind will just produce more fighting emotions, and yet ask yourself how much time you spend in the divisive mind in your day. Talking about people, comparing things, continuously in the divisive mind. So stop criticizing people, that's divisive mind. Start appreciating people, that's unifying mind. Look at your mind, and the more you surrender to unifying mind, you will find more happiness, joy, love. You will unify with your body, with your breathing, with your soul, with your higher self. All of that will start happening.
Soul feelings are unifying, emotions are divisive. Hate is divisive, fear is divisive, anger is divisive. All of these emotions are divisive, but feelings of the soul, unifying. Love, joy, gratitude, compassion, they unify. So always surrender to a unifying mind. A unifying mind is halfway between a normal mind, your everyday mind, and enlightenment, where you have no mind. The road goes through unifying mind. Soul feelings inhabit the unifying mind. When we feel incredible love, we say, all humans, we start seeing them as equal. All are equally deserving of my love, because my love is unconditional. So this is the wisdom of the mind. हम बात कर रहे थे, ये जो जोड़ने वाला मन है, तोड़ने वाला मन है, उनके अलग अलग टाइप के विचार होते हैं. हमने उदाहरण दिया, जो जोड़ने वाला मन है, जैसे कि एक वाक्य है कि सब मानव समान हैं, और एक दूसरा वाक्य है कि कुछ मानव दूसरों से अच्छे हैं. दो वाक्य हैं. अब सांसों में ध्यान देते रहिए, गोले में सांस लेते रहिए और ध्यान से इन दोनों वाक्यों को देखिए. बहुत ही साधारण उदाहरण है. सब मानव समान हैं, कुछ मानव दूसरों से अच्छे हैं. कौन सा वाक्य है जो आपके मन को जोड़ता है, जोड़ने वाला मन, और कौन सा वाक्य है जो तोड़ने वाला मन है? अगर गहराई से देखेंगे तो दोनों वाक्य ही गलत हैं. दोनों वाक्य सही नहीं है. सारे मानव समान कैसे हो सकते हैं? कोई 6 फीट का है, कोई 4 फीट का है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है. सब अलग अलग हैं, राइट? अगर साइंटिफिकली देखेंगे तो सारे मानव समान कैसे होंगे? नहीं हो सकते. तो ये भी गलत है. कुछ मानव दूसरों से अच्छे हैं. हो सकता है किसी चीज़ में अच्छे हों, उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी हो सकता है. मगर हो सकता है जिनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी है उनको मेडिटेशन नहीं आता, या उनके पैसे की कमी है, या उनको कोई गाना गाना नहीं आता. कई तरह के डिमेंशंस हैं. तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते हर चीज़ में ही वो दूसरों से अच्छे हैं. वो भी गलत है. दोनों वाक्य गलत हैं. सारे विचार ही एक तरह से इल्यूशन है, माया है. एनलाइटनमेंट विचारों के ऊपर है. कोई भी विचार एकदम सही नहीं हो सकता, क्योंकि यह मन का क्षेत्र है और एनलाइटनमेंट मन के ऊपर है. हालांकि दोनों वाक्य गलत हैं. एक जोड़ने वाला मन बनाता है, दूसरा तोड़ने वाला मन बनाता है. जब हम कहते हैं सारे मानव समान हैं तो एक प्यार आता है, एक खुशी अनुभव होती है, प्यार अनुभव होता है सब मानवों के लिए. तो यह हमें हमारी आत्मा से जोड़ रहा है ये वाक्य. हालांकि दोनों वाक्य गलत है. एक वाक्य जोड़ने का काम कर रहा है. ऐसे कई वाक्य हो सकते हैं
सब भगवान को सब प्यारे हैं, हम सब समान हैं, सारे धर्मों में अच्छाइयाँ हैं, सब मनुष्य सब मनुष्यों को दुख है, सब दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये सारे विचार जो भी बोले सब मन को जोड़ेंगे। हालांकि हो सकता है 100% सच और झूठ की बात नहीं कर रहे। हमने बोला सारे ही विचार झूठ हैं, क्योंकि एनलाइटनमेंट का सच विचारों के ऊपर है। विचार कभी भी जो रियलिटी है उसको पूरी तरह से बता नहीं पाएंगे, वो खाली विचार हैं। मगर जोड़ने वाले विचार को जीवन में लाएंगे तो जोड़ने वाला मन बनेगा। सांसों से जुड़ेंगे, शरीर से जुड़ेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, आत्मा से जुड़ेंगे, तोड़ने वाला मन बनाएंगे। कुछ मानव दूसरों से अच्छे हैं, इंडिया पाकिस्तान से अच्छा है, केवल हिंदू धर्म ही सबसे अच्छा है और सारे धर्म खराब हैं। इंडिया सबसे महान देश है, ये पार्टी उस पार्टी से अच्छी है, मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चे से अच्छा है। ये सारे विचार हम जो सोचते हैं, कई बार टीवी देखते हैं, इस तरह के विचार आते हैं और उनमें हम चले जाते हैं। ये तोड़ने वाला मन बनाते हैं, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं। तो प्रोग्रेस करनी है तो जोड़ने वाला मन बनाएं। दोनों ही मन को नमः करना है। नमः मन का ऑपोजिट, मन का विपरीत है नमः। जब हम हर मंत्र के आगे नमः लगाते हैं तो मन खत्म हो गया। मंत्रों में भी लगाते हैं, ओम क्लीम पार्वतीये नमः। यही उसमें भावना है, यही उसमें एक तरह की इसका सच है कि पार्वती के उस रूप को देख रहे हैं जिसमें मन नहीं, नमः है, आत्मा है, पूर्ण आत्मा है। मन शांत हो गया तो दिखेगी पूर्ण आत्मा। तो मन को तो शांत करना है, वो तो गोल है, कोई विचार ना रहे। मगर वहां तक पहुंचने के लिए जोड़ने वाला मन आपकी सहायता करेगा। तोड़ने वाले मन में जाएंगे तो मानसिक भावनाओं में आ जाएंगे, कंपैरिजन में, कौन अच्छा है कौन बुरा है, गुस्सा घृणा सारी चीजें आ जाएंगी। जोड़ने वाला मन बनाएंगे तो जुड़ते जाएंगे, सांसों से भी, शरीर से भी, आत्मा से भी, लोगों से भी। तो अगर पहुंचना है नमः तक, मन से नमः तक पहुंचना है। नमः है कोई मन नहीं, मन है आपका ऑर्डिनरी मन, खूब परेशान कर रहा है, खूब इमोशंस आते हैं, विचार आते हैं, उससे नमः तक पहुंचना है तो जोड़ने वाले मन की सहायता लीजिए। तो ये जो ज्ञान है, अगर इसको आप किसी भी सिचुएशन में लगाएंगे। आज सुबह एक बड़ा ही अच्छा ध्यान हुआ था जो बाबा जी ने कराया, जिसमें शुरुआत में ही एक लेडी थी जिस पे किसी ने
अपना हाथ रख दिया जहाँ नहीं रखना चाहिए, और उसमें एक सिगरेट की खुशबू आ रही थी। और जैसे ही हुआ, वो लेडी अगर सांसों में चली जाती और वो लेडी अगर गहराइयों से देख लेती कि जिस मनुष्य ने ये अभी किया मुझे, उसके दिल में भी, उसके मन में भी कितनी सफरिंग होगी कि उसे ये करना पड़ा। अगर वो आत्मा की गहराइयों को देख लेती उसी वक्त, सांसों से जुड़ के आत्मा में आके, और एक आध मिनट बाद उसको माफ़ कर देती और सांसों के साथ वो एनर्जी नहीं लेने देती अपने अंदर, तो वो जोड़ने वाले मन में रहती, तोड़ने वाले मन में नहीं। और उससे क्या होता, उसके साथ जो बच्चा था उसमें वो तोड़ने वाली एनर्जी नहीं आती, उसकी लाइफ बदल जाती। तो देखिए, ये जोड़ने वाला मन हर सेकंड हो सकता है। हर सेकंड आप माफ़ कर सकते हैं, हर सेकंड आप प्यार से देख सकते हैं, किसी में अच्छाई देख सकते हैं। ऐसा ही एक अनुभव ये श्री स्योगल के साथ हुआ। उनकी एक कहानी है, वो कहीं उनकी बहुत ही कहानियाँ हैं। पद्म संभवा के साथ वो उनकी स्पिरिचुअल पार्टनर थी। बुद्धिज़्म का तीसरा रास्ता उन्होंने फैलाया। तो कहीं जा रही थी और 4 डाकू आ गए और उन्होंने, और ये काफ़ी आगे पहुंच गई थी ज्ञान में, उन्होंने इनका रेप करने की कोशिश करी और इन्होंने अपने अपने प्रभाव से उन चारों को तांत्रिक विद्या सिखा दी और उनका वहाँ पर पहला इनलाइटनमेंट हो गया इन चारों का। वो ही सिचुएशन में तोड़ने वाले मन से देखते तो कुछ नहीं था, केवल एक हादसा हो जाता। वही जोड़ने वाले मन से उन्होंने उनको तंत्र विद्या सिखा दी, सेंसुअलिटी के बारे में ये सब कुछ सिखा दिया। इसका आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं, ये शे एंड द बैंडिट्स। कोई भी सिचुएशन में जितना हो सके आप जोड़ने वाला मन लाइए, तोड़ने वाला मन नहीं, और उससे सारी जिंदगी बदल जाती है। और ये जैसा हमने कहा, ये आपका ऑर्डिनरी मन है और नम्र तक पहुंचना चाहते हैं तो तोड़ने वाला मन बीच में, तो जोड़ने वाला मन बीच में है, उससे जुड़ते जाइए, सबको जोड़ते जाइए और नम्र तक पहुंचना है, क्योंकि सांसों से भी जुड़ेंगे, आत्मा से भी जुड़ेंगे, जुड़ते जाएंगे। So we were just sharing in Hindi the importance of the unifying mind, why that is the way to enlightenment. You have the ordinary mind. Now you have a choice always. You can at any instant pick unifying mind or divisive mind. There are only 2 kinds of minds in any instant. And I was discussing about this morning meditation. So Babaji had shown the meditation began with this lady, and this lady was inappropriately touched by a male energy who also had cigarette smoke smell. Now imagine how a unifying mind would have played out. Suppose the lady had the awareness to immediately go into breathing
say circular breath or breathing. And that lady had connected to her soul with soul feelings. And she had connected to this male energy soul. She would have seen from her unifying mind how much suffering this man must have to do such an action, how much suffering he must also carry. She might have just forgiven him after a minute or two, just by reflecting on the suffering of the man. Because for someone to do something like that, they must be very lonely. They must hate themselves. They must have no respect. They must have painful lives. That's a lot of suffering. If you reflect on that suffering, you might just forgive that man. Okay, let it go. And she would have continued breathing, using the soul feeling and breathing, which both are in the unifying mind. She would have just gone on. She would not have let that energy come into her body. Her child would not have been infected with that energy. If the child did not get that energy, the child would not have grown up in the way she did and had all kinds of problems that we talked about in the morning. So the whole life would have changed with this unifying mind. Just breathing, soul feeling, let it go. So see the power of unifying mind and divisive mind. Divisive mind is what she did. She got very offended. She let the smoke come into her body, that energy. She got even more angry. She stored the energy in her hips, and you know the whole story that went on. So she went into a divisive mind. So Parvati Ma says, always surrender to a unifying mind, connected to body, breath, soul, so on. And unifying thoughts, which is all humans are suffering. This man must be suffering also. Let me forgive this man, let it go. Jesus used the unifying mind. He forgave those who crucified him because he saw their suffering. He asked for forgiveness for the ones who crucified him. That's a unifying mind. So we have to reach from man, in Hindi they say man, mind, to namaha, which is no mind. That's enlightenment. In the middle is a unifying mind. That's how it goes. You cannot go from a divisive mind to enlightenment. If you keep judging, if you keep criticizing, if you keep comparing, if you keep emoting with hate, anger, and believe in divisive thoughts that we are better than others, this religion is better than that religion. If you keep doing that, you're in a divisive mind. And that will not lead you to enlightenment. There's a story of Yeshe Yogal in Buddhism. Yeshe is Padmasambhava's spiritual consort. We're talking about 8th century. She is Saraswati Ji's incarnation. She created Vajrayana Buddhism. There are many stories about her youth. She was the most beautiful one. The chiefs wanted, all the local chiefs all wanted to marry her. She escaped from them. She did not have a path with them. And she was walking, and there's a story of these 4 bandits.
and they wanted to rape her. She was quite enlightened by then. So what did she do? She converted that moment into a teaching moment with her influence, spiritual awareness, and she taught them about Tantra because their sexual energy was not balanced. And they say they got enlightened in that one instance she spent with them. Not fully enlightened, but they got their first enlightenment. Now that's the power of the unifying mind. It can take any situation, such a bad situation, and turn that around into a moment of enlightenment. But you need power to do that, of course. She was very spiritually empowered. A divisive mind would have simply, would have led to a bad incident, and that would have been the end of it. So this unifying mind and divisive mind, the choice is happening every minute. We're not saying go out of your thinking mind and go into no mind, namaha, get enlightened, because that's not happening right this minute. But right this minute, you can choose a unifying mind. Somebody insults you, look at their suffering. Why would they have to do this insult? What are they going through? Look at their suffering. Connect to their soul. So we said unifying mind connects with breath, body, soul, higher self. If you could see how much their suffering was, you might feel compassion. And you might just forgive them. Oh, let it go. They insulted me, let it go. You would not do many things like always get into comparisons, judgments, criticisms. Just, enjoying making fun of others. Many things that humans do which are divisive. And you would stay in unifying thoughts that bring people together, that bring your body, breath together with your soul, bring your soul feelings together. You would keep surrendering to this unifying mind. That you can do now. You may not be enlightened completely, but every minute you can choose a unifying mind. And as we said, both are false. Mind itself is false because it's Maya. Mind is illusion. You have to get into the higher self, way beyond the mind. Thinking stops. But while you are in the mind, choose a unifying mind. That is the wisdom that came from Parvati Ma, and it applies to every moment of your life. So with that wisdom, appreciate that breathing has a central role in creating a unifying mind. Breathing lies at the center of your body and your soul. It connects your body to the soul. It silences your mind. All happens with breathing. So keep breathing. Some of you might already be in a high energy place where there is almost very little breathing. Breathing itself becomes no breathing when the unifying mind completely unifies. You don't even need breath, you go into samadhi. No thoughts, only sensation,
primordial joy, emptiness. That's what can happen with unifying mind. So keep breathing, become aware of your body. Think we had enough wisdom for today. वापस सांसों में ही देखते रहिए. तो आज के ज्ञान को अपने अंदर लाइए. हमेशा जोड़ने वाले मन में जाना है, तोड़ने वाले मन में नहीं. सांसों से जुड़े रहना है. सांसों को लेते रहेंगे तो मन शांत होता रहेगा, आत्मा से जुड़ते रहेंगे, जोड़ने वाला मन बनेगा. अवेयरनेस में आते जाइए. अपने शरीर को अनुभव करिए. हर चीज में जोड़ने वाली भावना रखिए. विचारों में, भावनाओं में. जहाँ बैठे हैं, जिस चेयर पे, जिस कमरे में, जिस शहर में, सबसे जुड़िए. चेयर को महसूस करिए, कमरे को महसूस करिए. जिस जगह आप हैं उसको प्यार से महसूस करिए. शरीर को महसूस करिए. Become aware of your body. Keep unifying with your body, with the breath. Become aware of where you are sitting. The chair, most of you are not sitting on the chairs. You're sitting on the floor. Become aware of that. Become aware of the room you're in and the city you are in. Planet Earth, stay in awareness. And feel your body. To increase the sense of this unifying mind, touch your body from crown to your heart, to your abdomen, to your thighs, to your lower legs, and the soles of your feet. अपने जोड़ने वाले मन से पूरे शरीर को अनुभव करिए. क्राउन चक्र से हार्ट पर हाथ लगाएं, पेट पर हाथ लगाएं, थाइस पर, घुटनों पर, लोअर लेग्स और तलवों पर. धीरे धीरे हाथों को पैरों से
हिप से लोअर बैक और क्रॉस करके अपने आप को हक करिए और धीरे धीरे हाथों को चेहरे पर ले आए. Get your hands touching them on the lower legs, hips, lower back. Give yourself a hug. Cross your hands on your shoulders. Put your hands on your face. And slowly, when you are ready, open our eyes. आंखें खोलेंगे. 5, 4, 3, 2, 1, 0. आंखें खोल सकते हैं. Open your eyes. Thank you all the masters. Thank you everybody. So you can stretch your body, you can keep sitting, absorb the wisdom, bring it into your life. थोड़ी देर बैठ सकते हैं. धीरे धीरे मेडिटेशन से बाहर आना है. ओके, तो मीटिंग बंद करें. मेरे ख्याल से मैं ही होस्ट हूँ. हाँ, मैं ही होस्ट हूँ. मीटिंग बंद कर देते हैं. ओके, सी यू इन द मॉर्निंग. कल सुबह मिलेंगे.